Assalamu alaikum. Today I am interviewing one of Pakistan's biggest superstars. He's one of our most loved stars. He's a star that we haven't seen for a while. इस साल हम थोड़ी लकी हुए हैं कि हम फवाद खान को थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं. And अनकरीब बहुत जल्दी we'll be seeing him on cinema screens in The Legend of Maula Jatt. What I'd also like to say is, more than a star, I've always thought that Fawad is a very fine actor. He comes on screen not too frequently. Whenever he comes, he draws the eye and you just, he holds you there. So The Legend of Maula Jatt is coming on October 13th and we're excited. It has a star cast which includes Fawad Khan, and the trailer looks so good that we're all excited for it. Personally, I'm also excited for a selfish reason. I get to interview Fawad Khan after a very long time. So hello Fawad, how are you? I'm fine, Maria. आप कैसी हैं? How are you? मैं भी ठीक हूँ. So the movie is coming, and इसीलिए इंटरव्यू आज ये हो रहा है बड़े सालों बाद. And बड़ी मुश्किलों से मौला जट आई, मुश्किलात आई उसके रास्ते में. नाउ इंशाल्लाह इट विल रिलीज. आर यू श्योर इट्स गोना रिलीज, या अभी भी थोड़ी सी एंजाइटी हो रही है कि आ जाए? आप इस तरह की बात ना करें. नहीं, एक एंजाइटी आ जाती है ना ओवर द इयर्स कि भाई कब आएगी, कब रिलीज होगी, कब होना है. अब तो आप श्योर हैं? Yeah. Now there's no stopping it. The dam has broken. I know advance booking has started. Yes. So उम्मीद है that 13th October is going to be a good day for us. Inshallah. Have you seen it? Have I seen it? The whole thing? No, मैंने देखी थी. I saw it in pieces while I was dubbing it. But obviously उसके बाद बहुत सारी changes भी आती रहती हैं, and then it goes into its final process after sound mix and all of that. I have not seen it. You haven't seen the final version? The final version, no. तो आप October 13 को ही देखेंगे कि शायद उससे पहले आप देख लें, है ना? नहीं, अब 13th October को ही देखूंगा. और अगर शायद वो भी ना देखूं मैं डर के मारे. After hearing public's reaction, तो फिर शायद जाके देखूं. But no, I will see it on 13th of October. ट्रेलर ही अमेजिंग है. आई डोंट थिंक कोई ऐसा होगा जो इस ट्रेलर से एक्साइटेड नहीं हुआ होगा देखकर. No, I am excited. I'm equally excited, but I am also very nervous. क्योंकि इतने अरसे बाद I think I've done a full-fledged acting role that मतलब I'd been acting. हुआ ये था कि कोविड भी आया, सब कुछ हुआ. उसके दौरान और भी प्रोजेक्ट्स मैंने किए. काम तो आप बहुत कर रहे थे, नजर अब आएंगे. काम तो चल ही रहा था. काम चल रहा था तो अब नजर अब आएगा. So that is why I'm nervous, but I'm excited as well. Yeah, I think you should be excited. I think first of its kind movie है पाकिस्तान में. लोग कह रहे हैं कि it's going to change the way Pakistani cinema is. I hope that's true. पंजाबी में है, एक कंसर्न है कि पंजाबी में है, तो आपको लगता है कि क्या हुआ अगर पंजाबी समझ ना आई, फिर भी लोग देखेंगे? देखिए, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं ना, आई फील जिस तरह हम फॉरेन कंटेंट देखते हैं नीचे सबटाइटल से, लाइक सबटाइटल्स. वेल, आई मीन कोरियन फिल्म्स, एक तो वो भी ज़माना था व्हेन देयर वाज नो सबटाइटल्स, राइट? लाइक अगर आप कोई आई डोंट नो, हम वी वर बोर्न इनटू एन एज की सबटाइटलिंग आनी शुरू हो गई थी. उससे पहले भी शायद आती थी, बट नॉर्मली व्हेन यू आर वाचिंग अ मूवी यू डोंट रीड एवरीथिंग. आपके पास इतना टाइम नहीं होता. जब सीन्स, जब कट्स चेंज हो रहे होते हैं, एक्सप्रेशंस आपने देखने होते हैं, यू वांट टू रीड एट द सेम टाइम. इट्स काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्टिंग. सो आई फील दैट दिस मूवी इज़ अ वेरी विजुअली टेलिंग फिल्म. और बिकॉज उसके अंदर जो जिस तरह आई हैड मेंशन्ड अर्लियर कि आप डायलॉग के लबो लहजे से जो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि व्हाट द पर्सन इज़ ट्राइंग टू से. एंड देन बिकॉज इट इज़ सच अ विजुअली मैग्निफिसेंट फिल्म, I think it will keep those who don't understand Punjabi as well very engrossed and extremely into it. And it's not a complicated storyline also, na? It's good and bad, evil versus pure of heart. तो शायद उससे भी फर्क पड़ता है. Yeah, I mean it's not complicated in that way, but obviously I think जिस तरह नूरी की philosophy, उसका character, I think has been, and even in Maula's case. नूरी की मैं बात इसलिए ज़्यादा करता हूँ बिकॉज मौला जट जो ओरिजिनल थी उसके अंदर उसका जो प्रिकर्सर था दैट वाज वैशी जट, राइट? सो पीपल अंडरस्टूड वेयर ही वाज कमिंग फ्रॉम, राइट? नूरी नथ, पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दिस वांट फॉर मीटिंग द अल्टीमेट challenges, right? I don't think it is an accurate, but I'm saying a similar example is like Batman and Joker. Every time Joker has been shown,
there's a we never knew backstory. why he was the way he was, right? Even in Heath Ledger's case, we didn't know why he was the way he was, right? It was just a man who was insane, and he met a formidable foe, and he looked forward to fighting with that foe, right? And wanted, obviously, and that was the greatest pleasure in his life. इसी तरह नूरी नथ जो है एक ऐसा formidable foe है, या मौला जट उसके लिए एक ऐसा formidable foe है कि Nuri is looking for the ultimate battle, right? But this time, Nuri has also been given a shade, a backstory, a character, I feel. That's interesting. Why he does what he does. Which is very different from the previous film. It's a new age Maula Jatt. In fact, it's not layered. not a remake. It's layered in some ways, yeah. Right. It's not a remake. Ammara has always said that it's a not. reboot of It's a Maula reboot, Jatt. yeah. So you have the characters, but they have their own shades. They have their own shades. They come from a place that I think you can understand why they are the way they are. So that is why मुझे लगता है कि फिर वही बात कर रही थी जो आपके पंजाबी सबको समझ नहीं आती, लेकिन ये cues because वहाँ पे visual cues हैं, and it's a very visually exciting film as I mentioned before, so it will keep everyone engaged. Visually exciting है. इसका मतलब है कि shooting भी complicated होगी to achieve those visuals. Am I was a correct in saying complicated that? shoot, yes. वो जो action sequences थे क्या बहुत हफ्तों पहले से practice होती थी उनकी क्या? हुई थी. I think we rehearsed the fight scenes after they were designed. एक action team आई थी, which was led by a gentleman named Ian, and him and his team, they basically they would design the fight scenes and then they would show them to us, and then we would accordingly, they would choreograph it. And तो उसके I think 4 हफ्ते की rehearsals चलती रही उससे पहले. Yeah. Okay. Hamza and you and whoever else was involved in the fight. Yeah. अच्छा. और वो गंडासा भी बड़ा heavy लग रहा है. या है तो कुछ 6 किलो का गंडासा तो है, 5 से 6 किलो का तो गंडासा है वो. उठा लिया हर बार के did you use a body double? मतलब वैसे तो 5-6 किलो is nothing, but when you have this enormous, like ये गैंडॉल्फ के साइज की स्टाफ आपके हाथ में है जिसको आपको घुमाना है, and you have to you know use it with force, तो it is a difficult task. So it did take a bit out of me, and then ऊपर से उससे चोटें लगना कि it come back bruised here and there and all of that. But then again, that's a part of the game, you know. Like I think that we try to safeguard ourselves, and obviously बात है आपकी टीम भी होती है, they look after you कि यार चोट ना लगे. But ये तो inevitable होता है. So you happily accept those sacrifices for the sake of your craft, eh? Happily, yes, I would say happily. When you see the end product, everything is good. हाँ, that's true. End product अच्छा होना चाहिए. Journey तो चोटें भी हो. नहीं, मुझे लगता है कि journey is the most entertaining, is the most, I think, rewarding part of making a film. The journey itself, it changes you in many ways. The sweat and the labor and the friendships. The friendships and sometimes the enmities as well. Whatever you have experiences, na. It's basically it's a marriage of it's a kind of a marriage, you know, where you have a relationship that you build with people, and then you foster those relationships over a period of time until it is over. And आप बहुत सारी चीज़ों से गुजरते हैं, बहुत सारे मरहलों से गुजरते हैं. आप हंसते भी हैं, आप इकट्ठे हंसते भी हैं, रोते भी हैं, गुस्सा भी करते हैं, and आपकी बहुत सारी securities, insecurities, all of this, it's a mixed bag of things. I don't think that this is something that is unknown to anyone. हर फिल्म के अंदर होता है ऐसा, and it's not as clinical as we may think कि आए बस किया और चले गए, as much as you may want it to be. So at the end of that road, you have gone through so many experiences, and when that final product comes, it is like the birth of a baby, right? And that is when everyone comes together. And बाज़ औक़ात लोगों को शिकायतें भी होती हैं, but most of the times it is that happy ending to a fairy tale. तो end product भी important है, लेकिन journey भी ज़्यादा important है, but the journey है. I feel for me is the more rewarding part, because end, those are the experiences that you gain along But that the way. doesn't mean that you don't want the end product to do well. You want people to No, love it as मैं you ये तो नहीं have कह loved रहा, it. बिल्कुल भी imply नहीं किया मैंने. Yeah, obviously the end product should do well, and I think it has been the labor of love has been justified.
Inshallah, yes, I think so. I mean, I've just seen the trailer and I have communicated with Ammara lots of times. Who's very excited. वो इतनी excited है कि you're like कि हाँ कुछ है कोई बात. So यानी कि वो 4-5 किलो का गंडासा, fighting sequences, horse riding. You're also riding a horse in it. Did you know how to ride a horse? Not really. और जो जितना किया वो तुक्के में हो गया. अच्छा. But I do now. I off and on still do horse riding. So about a month back or whenever the trailer released, I was talking to Ammara on WhatsApp and she said, Maliha, do you know Fawad got sick during the shoot? And I said, okay. And she's like, this is a story. He gained too much weight and he got sick. And I saved that story away कि I thought जब मैं फवाद से मिलूँगी कि मैं पूछूँगी कि आपने ज़रूर weight put on किया था. That's what she said. Yeah. And in a very short time. In a very short time, in a couple of weeks. And no, I'd say a month and a half probably. And you got hospitalized for it? Well, actually, पहला हमारा गुजरा, which was most of the action shoot, because the action team is something that's a phase. Obviously, बात है, you shoot films in spells, right? And action का जो spell होता है वो बाकी spells से different होता है. So we got through the action spell, and weirdly enough, right 2 days after the team left, which is 2 days after the shoot kind of wrapped, 2-3 days, I got a very sharp pain that started from my back and started coming towards the front, and I don't know why, I just had a strange thought. मैं एक तो hypochondriac भी हूँ बहुत ज़्यादा, मुझे एक आदत सी पड़ गई हुई थी उस वक्त, अब उतनी नहीं है, लेकिन I would constantly be reading, for some odd reason I just read medical papers, peer reviewed for the doctors, but I'd be reading symptoms and all of that stuff, which kind of turned me into a hypochondriac. So मुझे ऐसे लगा जैसे कि मेरी kidneys में pain हो रहा है. I was like, something's wrong with my kidneys. And I went to the hospital at the advice of my friend, जिन्होंने कहा कि आप जाके अभी blood test करा लो और ये कुछ tests हैं ये करवा लें. And it turned out my kidneys had shut down, they had stopped working. But no permanent damage had been done. वरना होता ही आमतौर पे AKD is a condition, if I'm not wrong, it's called acute kidney disease or disorder or whatever. And उस वक्त for a short period of time, your kidneys get jolted and they swell up, right? And फिर उसके बाद what happens in the aftermath is कि उस पे scarring आ जाती है. That means you've damaged tissue. To heal from that is very difficult. But in my case, it wasn't that. I took bed rest after that for a few months. Your kidneys were just protesting at what you'd done. They were protesting. At that point, yeah. So they said कि नहीं, scarring नहीं हुई, बचत हो गई है. You gained weight and your body couldn't manage it because of course you had diabetes. No, I think there were other factors involved. Again, like I said कि जिस तरह मैंने पहले भी कहा है कि कुछ ऐसे choices होते हैं जो आपको सोच समझ के करने चाहिए. मैं उसमें इतनी डिटेल में इसलिए जाता नहीं. What were you thinking? Why? बट मैं आपको बताऊं कि सिर्फ यहाँ नहीं होता है ये पूरी दुनिया में होता है, ये हर जगह होता है. ये आपको झूठ बोला जाता है कि जब लोग कहते हैं कि ओह हो क्या इंटेंस फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, they can't, humanly it's not possible to do it in a matter of months. So when you do that, obviously you apply a lot of strain on your body. And there are a lot of actors, very established actors in Hollywood and Bollywood who've done it. But it's not a game, and some have suffered. So I think I was one who had suffered. I think backstory हमें पता नहीं होती, जो इतनी ज़्यादा extreme transformation होती है, there must be some effect or the other on the body. Maybe we don't know. Now we know that you had to endure. No, I'm sure everyone wants when it's even in the sports industry as well. ठीक है ना? तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ें सोच समझ के करनी चाहिए और सोच समझ के decisions जो हैं ये लेने चाहिए. एक मिसाल के तौर पे, there's another body transformation. I remember, I forget the name of the movie. It's about the assassination of John Lennon, which is played by Jared Leto, whatever the pronunciation is, and he gained an insane amount of body fat for the role, right? And his diet was literally, he'd have lard,
he'd eat lard. Lard basically is एक फैट का एक फॉर्म होता है, जिस तरह हमारे यहाँ लार्ड जो है घी का एक नाइटमेयर वर्जन होता है, ठीक है ना, वो खाता था, मक्खन खाता था, ठीक है ना, and that's literally what is, I think that's what his diet was. You can research it, you can read about it, and by the end of it, जब उसने इतना वजन पुट ऑन कर लिया था, उसको गाउट हो गया, उसको यूरिक एसिड का लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम हो गया. And then when he lost it, he said, I'm never going to do this again to myself, not at least gain weight. Will you ever do this again to yourself? I don't think I'll ever do this again to myself. I Another don't think example your is... family will let you do this to yourself. No, I can't afford to. I have a family and I have kids. I know this is, for me, this should not be, your profession should not be, अगर आपने करना है, करेंगे, आपकी मर्जी है. मैं नहीं कर सकता ये काम, ठीक है ना, बिकॉज मुझे लगता है कि सोच समझ के अगर एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में किया जाए तो ठीक है, बट देर आर प्रोज एंड देर आर कॉन्स. एक और मिसाल है क्रिश्चियन बेल की, फॉर द मशीनिस्ट. He lost so much weight that they say that acting उस फिल्म के अंदर हुई है, it was because his mind had become foggy. He couldn't think anymore. And I think Machinist के बाद then he did Batman, if I'm not wrong. So if you look at that amount of weight loss that he did for that film, that was unhealthy. But it's your choice. आप करना चाहते हैं, आप करें, लेकिन ये सोच समझ के करें. Before Maula Jatt for any role at all, weight transformation. I did for Khoobsurat. I lost, like that was the first time when I tried to come into the prime of my fitness. ठीक है ना. After a very long time, I was hitting the gym really hard. But there was something healthy about it, because I took a good 4 months, 5 months. ये तो you're saying a month and a half, right? This is a month and a half. To become, I have to go from like around 80, 78, 80, maybe 81 kilos to 100. And वो पता चलता है, the transformation is dramatic. अच्छा, उसके बाद you learnt your lesson. 3 महीने शूट भी रुक गया होगा, जाहिर है. आप मौला जट नहीं, I think शूट तो खैर ये बहुत चैलेंजिंग शूट था. Coming to the shoot, ये एक इतना चैलेंजिंग शूट था कि आउटडोर सेट्स लगे हुए हैं. Weather in Lahore is extremely unpredictable. लाहौर से बाहर कहीं लगे हुए थे? नहीं, थोड़ा सा बाहर ही था, but I'm saying the weather Lahore and around Lahore is very unpredictable. Pollution की वजह से भी वैसे ही जो है rain, humidity, all of that stuff, everything comes into it. तूफान चलते थे. एक आध दफ़ा तो ऐसा हुआ था कि got into the entire get up, came out और एकदम से काली घटा आ गई थी and it started raining and then we had to call off the shoot. Set गिर जाते थे, रिपेयर होते थे. हवा से? इतनी तेज हवाएं चल रही थी, and obviously बात है when you're in the fields तो वहाँ पे तो wind force और होती है ना. यहाँ पे तो you've got so many corridors, but यहाँ पे भी जब हवा अगर बहुत तेज चले तो लोगों के तो सोलर पैनल उड़ जाते हैं ऊपर छतों से. अच्छा, तो फिर उसकी वजह से और लंबा खींचा, जाहिर है, because you had to deal with the weather and all. How long did it take to shoot the movie? I'm not wrong, around 2 years? 3 years. 3 years. In broken spells, yeah. थी भी तो है भी तो इतनी detailed. Like I said, it's a labor of love. It is a very, it is, I think, the most ambitious film in recent Pakistan film history. Do you think Pakistani cinema is ready for such an ambitious film? Why not? सिनेमा जनरली एक हो गया है, काफ़ी अनरिलायबल हुआ है पिछले कुछ सालों में, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ एन ऑडियंस दैट ऑफन डजंट ट्रस्ट द पाकिस्तानी मूवी दैट्स कमिंग इन सिनेमा, बिकॉज वी आर स्टिल इन दैट स्टेज जब हम लर्न करें. तो कभी कभी मूवी जितनी ट्रेलर में अच्छी लग रही होती है वो ऐसी नहीं होती, तो ऑडियंस जो है वो थोड़ी सी ट्रस्ट नहीं कर पा रही सिनेमा को. उस पर इतनी मेहनत, टाइम, एफर्ट, मनी Maula Jatt पे लगा हुआ. Do you think it should have been less ambitious in order to cater to an industry that's very volatile right now? Again, ये सवाल is more suited. ये बेहतर है कि अमारा और बिलाल से पूछा जाए, लेकिन जो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है इसके बारे में, I think बननी चाहिए. Maybe I may not be the bravest filmmaker that would take a risk like that, but मुझे लगता है कि जितना मैं खपती हूँ और जिन लोगों के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ उनको शायद obviously बात है, you know, it kind of bothers people कि when you are just like sort of plonking and just sort of draining money into a project, because हम ये चीज़ भूल रहे हैं that the art industry and especially the film industry is an industry. It is no longer just a personal expression. It caters
टू एन ऑडियंस, वो आवाम, वो जो जो आपके देखने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, वो एक एक्सपेक्टेशन से आते हैं, उनकी कोई तवक्को होती है कि जब वो सिनेमा में आए तो वो कोई चीज़ देखना चाहते हैं और उस चीज़ को देख के खुश होकर जाएं। एंड दैट इज़ द होल थिंग अबाउट एन इंडस्ट्री। आप वो चीज़ बनाते हैं जो लोगों को पसंद आए, ऐसा ही है ना। हाँ, कोशिश तो यही होती कोशिश ही होती है। और ख़ास करके अब के आज के ज़माने में तो बिल्कुल ऐसा हो गया। हालांकि मेरा जो मेरा पर्सनल ओपिनियन अबाउट दिस इज़ कि आप लोगों का टेस्ट बदल भी सकते हैं। यू नो, some things are acquired tastes. In fact, a lot of things are acquired tastes. When we are children, तो हमें चीज़ें खाने में अच्छी लगती हैं। जब हम बड़े होते हैं, हमारा एक्सपोजर बदलता है, हम दुनिया के किसी और हिस्से में जाके रहते हैं, हमारे टेस्ट बदल जाते हैं, राइट? सो फिल्म एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके घर बैठे बिठाए आपको पूरी दुनिया जो है घुमा के ला सकते हैं आप लोगों को, and they can learn about different things and it can diversify their palate as well, right? of course. Now coming to Maula Jatt, ठीक है, मुझे लगता है कि एक तो इसके अंदर वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि वैसे भी पसंद आएंगे लोगों को, बट एज फार एज अ वॉलेटाइल इंडस्ट्री इज कंसर्न्ड, जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे तब तक हम डाइवर्सिफाई और ग्रो नहीं करेंगे। किसी को तो रिस्क लेनी है ना। सो आई फील कि ये एक अच्छा रिस्क है जो लिया गया है, इट विल पे ऑफ, बट हैविंग सेड दैट इट इज़ अ बिजनेस कॉल एट द एंड ऑफ द डे। एज अ मेंबर ऑफ द इंडस्ट्री आई फील दैट ये तवक्को और इतनी के तवक्को से ज़्यादा आई थिंक ये लाजिम कर देना लोगों पे कि नहीं यार आप कुछ डिफरेंट करेंगे तो ही जो है हम आके देखेंगे, वो शायद अनफेयर हो। जो चीज़ जो बनाना चाहता है वो बनाए एंड पुट इट अप फॉर डिस्प्ले, बिकॉज द इंडस्ट्री नीड्स टू रन। सो अगर मौला जट के बाद अगर हर फिल्म ऐसी बननी शुरू होगी तो बहुत मुमकिन है कि इंडस्ट्री फिर कोलैप्स कर जाए, बट दे माइट बी अ चांस दैट ग्रो भी करे। बट द बजट्स आर सच फॉर दीज फिल्म्स दैट इकोनॉमिकली हम शायद उस तरह सस्टेन ना कर पाए। तो एक आध जो है इस तरह का धमाका होता रहे तो बहुत अच्छा है। एंड बाय द वे बजट्स हमारे एक्सपैंड हुए हैं। आई फील कि हमारी इंडस्ट्री जो है इज़ इवॉल्विंग। इफ़ यू लुक एट ऑल द फिल्म्स दैट हैव कम आउट दिस ईयर, वजाहत फिल्म, वजाहत रऊफ़ फिल्म, Ehtishamuddin's film, especially these two, because they kind of work on they can go into the indie zone because they talk about some socially, एक में तो बहुत socially relevant issues जो discuss हुआ, right? And then you had this film like a film like Qaid-e-Azam Zindabad, ठीक है ना, which I thought had a very it had a sweet again no comparison, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई उसकी तरह की चीज़ है कि नहीं है, बट इट हैज़ दैट फील कि जिस तरह राजकुमार हिरानी की फिल्में होती हैं, वे यू नो यू कम आउट विद द फील गुड फैक्टर फ्रॉम द फिल्म, राइट? एंड इट इज़ ऑल्सो अ मेन स्ट्रीम फिल्म। देन यू ऑल्सो हैव हुमायूं सईद्स लंदन नहीं जाऊँगा, विच आई थॉट अगेन कि जिस तरह सिक्स सिग्मा की फिल्में ओवर द ईयर्स इवॉल्व होती रही हैं, आई थिंक दे फाउंड द स्पेस एंड दे डूइंग इट रियली वेल, यू नो। सो ये वैरायटी है, देयर इज डाइवर्सिटी, बट देयर इज ऑलवेज रूम टू डाइवर्सिफाई मोर, एंड आई थिंक मौला जट इज द राइट, यू नो, एक नया मसाला है जो कि इस देख में डाला गया। एक्सपेंशन तो हुई है, यू राइट, ऑल दीज एग्जांपल्स आर करेक्ट। हाउएवर कोई नई मूवी बड़े टाइम से अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी नई मूवी अनाउंस नहीं हुई है। एक तो बैकलॉग है पैंडेमिक की वजह से, उन मूवीज़ का जो रिलीज़ होनी है उनमें 3 तो आपकी हैं, बट द थिंग इज़ दैट उसके अलावा लोग थोड़ा डर गए हैं बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी ऑफ सिनेमा। पीपल अराउंड मी से दैट मौला जट विल चेंज थिंग्स, इट विल गिव होप अगेन। Inshallah. So that's another reason why इस scale की मूवी होनी चाहिए। that it will. But आपने जो बात की है ना कि क्या ये बेहतर है हमारी इंडस्ट्री के लिए, तो मुझे लगता है कि अगर बेहतर इकोनॉमिकली ना भी होता, रिस्क लेना जरूरी है, of course, और हर बंदा नहीं ले सकता। सो सलाम है इन लोगों की ब्रेवरी को कि वो उस तरह का अगर रिस्क लिया भी है उन्होंने, अव्वल तो मुझे लगता है दिस रिस्क विल पे ऑफ, बट व्हेन दे वर स्टार्टिंग इट वाज अ रिस्क, राइट? इट वाज अ गैम्बल, दे डिडंट नो व्हाट इट वुड टर्न आउट टू बी लाइक इन द एंड। एक ऐसा धमाका जरूरी है, like you said, yeah. Achha, you were saying Noori has shades to him. Does Maula also have plenty of shades to him? Is it a very? I think Maula has layers. Shades की में से बेहतर I think layers. कि you know कि वो story के अंदर back stories जो हैं पिछली फिल्मों में इतनी नहीं थी. So इसके अंदर हैं. और माहिरा है और हुमैमा है. Will we see lots of Mahira Faris in you? है, of course, है, of course. You no, know, I meant the leading ladies opposite you. हाँ.
The leading ladies opposite you are, of course, Mahira and जी, then जी, Umaima, जी. right? Yeah. And then, of course, there's a big cast, like you said, and it's a very interesting cast. And जो उनके character posters भी आ रहे हैं, उनसे भी वो एक है ना transform हुए में सब. Yeah. It's a different surreal world of Maula Jatt that Yeah. we see in the posters also. Will we see a lot of the famous Mahira Fawad romance? It's a famous romance. In this film, no, I think you see it in a very different way. But yeah, there is romance there. But ये चीज़ ना समझिएगा कि ये फिल्म उस पर hinge करती है. But I feel कि it comes at the right point in the film, and it adds the much needed romance that a film like this requires. It's always a big factor seeing you and Mahira together. क्योंकि बस वो एक हमारा एक benchmark set हो गया हम सफ़र से फवाद एंड माहिरा. और इस साल तो हम देखेंगे नीलोफर कब रिलीज हो रही है वैसे. Completely off tangent. माहिरा फवाद से मुझे याद आया. नीलोफर इज आप स्टूडियो में है मेरे, तो उस कमरे में काम चल ही रहा है उस पर. अच्छा. और इसके बाद शायद मैं आपको कुछ उसका थोड़ा सा कुछ दिखा भी दूँ. है. बट वो आप चला नहीं सकते ऑब्वियसली. हाँ ठीक है. But it's well on its way, and I think we're looking at towards the end or the start of next year with that as well. Oh, that's exciting. Yeah. That's exciting. I just Again, jumped. I'm just मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डरा हुआ और खपती इंसान हूँ. Not being Mr. Perfectionist here or something, but I would like to for it to be in its like complete एक चीज़ हो जाए. तो उसके बाद जो है फिर उसके बाद दिल खोल के बात करेंगे. Until you're completely satisfied with it, you don't want to, है ना? I think all the people in the team. So it's not just my call, but I think all of us. Mahira told me that she's playing a blind girl in it, and of course Right. वो तो Instagram पे भी हर जगह है. We know a little bit about Neelofar. It sounds very romantic. It also is. sounds like a very layered, sad story. Is it? No, I don't think it's sad. No, I mean it has everything in it. But yeah, it's a very one of a kind, I think, romance. I mean, in today's times, and I'm saying that all films are one of a kind. सारी की सारी फिल्म मुनफरिद हैं अपने अपने लिहाज से. सबकी सारी की सारी जो हैं they tell their own stories, अपनी कहानियाँ बताती हैं. और ये भी एक हमारी कहानी मुझे लगता है मुनफरिद है उस तरह से कि that it is been told in a very different way. And Neelofar, of course, focuses on the romance. You know, whereas in Maula Jatt, the romance is just a part of the overall narrative. Neelofar is a romance through and through. And Maula Jatt now, back to Maula Jatt, does it have lighter moments also? It looks like a heavy duty, intense, dramatic. It does have lighter moments, but the lightest moments are between Faris Shafi and Ali Azmat, and what performances, amazing performances by them. I mean, everyone has done an amazing job. Amazing. But yeah. Cool. Amazing movie coming up. I'll take The amazing Maula Jatt. Inshallah. I think it will be. Really, you know, I do a lot of pre-movie interviews. Everybody says it's amazing, but honestly, I think Maula Jatt is going to be amazing. नहीं, I think that's unfair. मुझे तो हर फिल्म बहुत amazing लगती है. फवाद, इसका ट्रेलर जो है वो बहुत आपको होपफुल करता है. शायद maybe it's a certain genre that some people will like more than the other. It's just that it's something so new to Pakistani cinema that it gets us excited. ये तो बात है ना कि नई चीज़ है. अच्छा, you know, so you were riding a horse, you were fighting, and till that time you were okay, and then you fell ill. क्या उसके बाद आपने अपनी हेल्थ का ख्याल किया और क्या मौला की लुक्स में चेंज आया आगे के सीन्स? मौला की लुक्स में चेंज नहीं आया. कैसे? So I think I stayed in the character. वो जो रूप धारा हुआ था वो I think that stayed for 2.5 years at least. Because एक चढ़ाना वजन बहुत आसान काम होता है, उतारना बहुत मुश्किल होता है. अब तो उतार लिया फवाद. नहीं, अभी भी उतार रहा हूँ मैं. बीच में फिर जो मैं फिर हुआ पतला और फिर हो गया, फिर से मैं फूल गया गोभी की तरह. और नहीं, no, you are being modest here. No, नहीं फूले गोभी की तरह. But उतना ना फूलें फिर से कभी. फूलूं फलूं. Your family must have scolded you like anything कि ये क्या कर दिया. Everybody must have been worried, of course. ऐसे तो नहीं करते. everyone. You just had a daughter also, little baby. And listen,
completely off tangent from Maula Jatt again. You now have 2 girls, and a lot of people change when they have daughters. You know, girl dads, girls can really twist their fathers around their fingers. Are you that kind of girl dad? Are you completely? I'd like to think of myself like that. I'd like to think of myself like that. लेकिन नहीं, ever since I had my first child, I changed. But बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो changes आती रहती हैं. Sometimes for the better, sometimes for the worse. And I think that's the process of life. But as far as my interaction with my kids, सबके बच्चे उनको अजीज होते हैं. और मेरे बच्चे भी मुझे बहुत अजीज हैं. And the nature of your work is such, actually, it's actually great that you can have time off for long spans with the kids. That's something that a lot of dads don't. I mean, उसके अपने pros and cons. Pros and cons, हाँ, of course. There are times when you're completely busy. हाँ, of course. And so then, after Maula Jatt, you've also done Miss Marvel. You know, it was a shorter role, of course, but that was there. Is Hollywood completely different? Is Hollywood completely different? Completely different from the way it operates. मैं जितनी मेरी participation थी, जितना मैंने देखा उसमें, because I wasn't there for a long time. I was there for a very short time. And yet, how excited we were! God, you know. Finally, we get to see Fawad. Fawad, you're so well loved. That's something I'll come to later. अच्छा तो हाँ, the Hollywood experience. The Hollywood experience, I think filmmaking in essence हर जगह एक जैसी ही होती है. और आजकल तो एक जैसी ही है. डिजिटल मीडियम हैज़ मेड यू सो, आई थिंक कि हमें थोड़ा सा आज़ाद कर दिया. उसकी अगेन मैं कहता हूँ एडवांटेजेस भी हैं, मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं उसके. मेरिट्स एडवांटेजेस ये हैं कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती आप वापस आकर रीशूट कर लेते हैं, ठीक है. बट ये उसका डिसएडवांटेज भी है. एंड आई थिंक ये अब हॉलीवुड में भी होता है, ये बॉलीवुड में भी होता है, ये लॉलीवुड में भी होता है. ये मुझे लगता है हर जगह ऐसा हो रहा है. विच आई थिंक इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ फिल्म मेकिंग. बट समहाउ द अदर मैं शायद इतना बुढ़ा नहीं हूँ जितना मैं अपने आप को समझता हूँ. लेकिन मुझे लगता है एज अ फिल्म प्योरिस्ट, फिल्म मेकिंग का मज़ा शायद तब होता था जब आप, एंड बाय द वे ऐसा नहीं है, ये पुरानी फिल्में भी जब बड़े बड़े ये स्टूडियोज़ थे जो कि अभी भी हैं, बट उनमें से कुछ बंद हो गए. फिल्म बनती थी और ओवर स्केड्यूल जाती थी, ओवर बजट जाती थी. और बाज़ औक़ात जब डायरेक्टर जाके उसको कट करता था एडिटर के साथ बैठ के, वापस आता था, कहता था कि नहीं मुझे ये फिर से करना है. लड़ाइयाँ होती थी स्टूडियो के साथ, लड़ाइयाँ होती थी. फिर मुझे लगता है कभी कुछ तो मुझे लगता है कहानियों पे तो बंदूकें निकल आती थी कि मैं अपने आप को गोली मार लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा. लाइक नो, आई एम जस्ट टॉकिंग लाइक maybe I'm making some of this stuff out, but I'm telling you that it used to come to a point where there used to be meltdowns, right? But उस वक्त फिल्म मेकिंग प्रोसेस कुछ ऐसी होती थी कि आप एक फिल्म को तैयार करते थे कागज़ के ऊपर और उसी पे बैठे रहते थे. स्टूडियो आपको जो है एक साइनिंग अमाउंट या रिटेनर पे रख के वो काम करवाता रहता था. एंड वहाँ पे भी मज़ा ही आता था कि स्टूडियो जल्दी में होता था बनवाने के लिए चीज़. और जो है उस वक्त राइटर और डायरेक्टर जो है कहते थे कि बिकॉज कम थे लोग, जैसे जैसे टैलेंट बढ़ता जाता है और टैलेंट पूल बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जो है अपॉर्चुनिटीज़ बिकम स्केर्स. सो देन यू कम अंडर मोर प्रेशर विद स्टूडियोज. एंड सॉरी बेयर विद मी फॉर अ सेकंड, मैं ज़रा लंबी बात बता रहा हूँ. बट okay, you tell me and then I'll tell you. उसके बाद होता ये था कि जब वो सब कुछ तैयार होता था, उसके बाद साउंड डिपार्टमेंट, कैमरा डिपार्टमेंट, एक्टिंग, कॉस्ट्यूम, डायरेक्टर, all of these people used to come on set. And after so many rehearsals, एक चीज़ होती थी जो कि फिल्म की कॉस्ट को उस वक्त वो एक बहुत सारी चीज़ें डिटर्मिन करती थी, बट एक चीज़ थी जो कि was an additional cost, which would put in additional time as well. इसको हम कहते थे फीता, फिल्म रील. And you had only 3, 4 or 5 takes that you could play with. And उसके बाद अगर आपने वो सारा सेट लगा के सब कुछ छाप दिया तो आप तब तक नहीं देख सकते जब तक कि फिल्म डेवलप नहीं होती थी. और फिर से वो, और उस वक्त तो एडिटर मतलब लाइक यूज्ड टू डू द डेलीज थ्रू अ स्मॉल व्यू फाइंडर. सो until the film was not edited or the scenes were not edited and put up for the studio and for the director to see, तब तक फिल्म कंप्लीट नहीं होती थी.
So like you did not know कि आपने करा क्या है. अभी तो आप क्या करते हैं, आपने अभी शूट किया है, आप ले जाएंगे कंप्यूटर में प्लग इन करेंगे, आप देख लेंगे क्या खराबी है. जितने भी रीटेक्स लेते थे उतनी ही रील यूज होती थी, उतनी ही रील यूज होती थी. उस पे भी लड़ाई होती होगी, है ना. पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा होती थी. मतलब मुझे याद है शुएब साहब की फिल्म के अंदर, शुएब साहब की फिल्म में we did on reel, right? Okay. It was shot on film. Okay. So ever since that culture has gone away, it has made us, I think, all the departments of जो फिल्म मेकिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं a bit lazy. रिलैक्स्ड हो गए, रिलैक्स्ड हो फिर से कर लेंगे, जिसकी वजह से ये चीज़ होती है कि जी वो विगर, वो पैशन अभी भी है, बट पहले तो ये होता था ना कि ओके गाइस, एक शॉट देना है, बेस्ट देना है ना, ये करना है. अब इसमें 4 गाड़ियां फटनी है, ठीक है ना, और ये होना है और वो होना है, और ये मैं अगले 6 महीने बाद तक तो देख ही नहीं सकता, ठीक है ना, 7 महीने तक देख नहीं सकता. सो coming back to that point where you were saying na ke what we were talking about Hollywood, ke how is it any different and all of that. So I think that digital medium has made that experience there as well just as relaxed, maybe a little less, because abhi bhi unke crews jo hote hain wo 300 log ke hote hain, and they go to different parts of the world and they don't have that opportunity to do it again and again. But because the scale, the economies of scale have grown so big, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें होती हैं. सो वो एक ऐसी चीज़ है जो कि सारी इंडस्ट्रीज में अब आई थिंक कॉमन है. एंड व्हाट सेट्स इट अपार्ट इज प्रॉब्ली जस्ट द साइज एंड द इकोनॉमी ऑफ स्केल, यू नो, एंड ऑल्सो द फैक्ट कि हॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो, वहाँ पे फिल्म का जो सिलसिला है वो जब से कैमरा रोल होना स्टार्ट हुआ था तब से रोल होता ही रहा है. हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट ट्रेजेडी है कि 2 से 3 बार जो है एक ब्रेक आया, एक वक्त आया जिसमें इट वाज अ ड्राउट. There was no film. Yes. So we are kind of learning to walk again, and I think we're almost running. Yes, I think we are slightly jogging at the moment, and maybe we'll break into a sprint sometime soon. Yeah, inshallah. Yes. And then I don't think there'll be many differences. Which is why I think we will be seeing Fawad in film. We might not see Fawad on TV anytime soon. I think you've fallen in love with the cinema screen now, and maybe is that the case? No, I wouldn't say that. Then why don't I see you in TV dramas anymore? Just takes the life out of me. सुबह से लेकर रात. It's a hard job, yeah. I mean, I'm not saying this is not a hard job. This is a very hard job. But वो और तरह की maybe someday, who knows, अगर कोई बहुत ही कोई मजेदार स्क्रिप्ट आए तो शायद कर लें. But अच्छा Fawad, you know there have been many times over the past years when I've heard कि ये एक स्क्रिप्ट है, ये मूवी है, बहुत एक्साइटिंग बन रही है. You know, you hear from people and we're going to get Fawad Khan to be in it. You know, वो आपकी तरफ जा रही होती है शायद वो स्क्रिप्ट, आप उसमें नहीं होते, कोई और आ जाता है. खैर वो मूवी ऑन पेपर या फ्रॉम व्हाट द मेकर्स आर टेलिंग मी बहुत एक्साइटिंग लग रही होती है. जब मूवी आती है तो बहुत बुरी होती है, ठीक है. तो मैं हमेशा सोचती हूँ फवाद को पता कैसे चलता है और बाकियों को क्यों नहीं पता चलता, आपको कैसे पता चलता है? ये मैं बड़े टाइम से ये सवाल मेरे दिमाग में इन सालों में है कि हाउ डज ही नो? And how do the other people? You can't answer for the other people. That's not always been the case, but yeah. Anyways, you have a sixth sense about scripts, I believe. Do you? Sort of. है ना? Sort of. Not always, but yeah, a lot of the times, yeah. I can predict disaster. And hits. And hits. Huh? And hits also. I think to a certain degree, yeah. Oh. Certain degree. I'm not saying I can always be right, but yeah, थोड़ी सी foresight है. अच्छा. So you can tell. Yeah. That's your answer for it, that you just have a feel for it. Eh? I just read it and I think so. Just speaking of droughts, you spoke about how there was a drought in cinema. When the pandemic came in, बहुत से लोग परेशान हुए, बहुत से लोगों का काम रुका या स्लो डाउन हुआ. फिल्म मेकिंग का तो स्पेशली काम बहुत टाइम तक बिल्कुल ही it hung in the balance, and you with producing one movie, Maula Jatt, finally ready to come out and not coming out. Was it a tough time for you, as it was for all of us emotionally? I don't know how you define a tough time. बहुत सारे changes आए, जिस तरह मैंने कहा, some for the better, some for the worse. But when I came back from जब 2016 में जब मैं उसके बाद मौला जट की प्रेप स्टार्ट हो रही थी, तब से लेके अब तक मैंने अपना कोई काम देखा नहीं था. तो शायद फ्रस्ट्रेटिंग लगता था कि यार अगर मैंने करना ही है ये काम,
तो कुछ नज़र तो आए ना, ताकि मैं भी प्लान कर सकूं कि मैं ये काम कर सकता हूं कि नहीं कर सकता. Am I good enough for it or not? Of course you are. No, हर चीज़ की एक लाइफ होती है, हर चीज़ की एक लाइफ होती है. So I was like, is my time up or is it not? And you would like to know that, right? Rather than being, it's like, I know it's a very crude example. आपको एक death sentence है आपकी, and आपकी death sentence prolong होती जाए. It makes it, the anticipation may teach you restraint and patience, or it may just make you feel even more and more sick every day. And I think the latter is what would be a swift punishment is the easiest, isn't it? So rather than waiting for it to come. rather than waiting for it, it's the wait that kills you. That's what they say. So I think आए होंगे और ये रिफ्लेक्ट किया होगा, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट किया होगा. I won't go into any personal details about that, but Don't, yeah. but yeah, I mean, I kind of, at the end of it, I was like, now at this point maybe I can just take a deep breath, and I hope now, or maybe the past 2-3 weeks or whatever the thing is, that the change, I think the positive change that may have come is कि यार जो होना है वो होना है, हो जाएगा ना. ज़िंदगी फिर भी आगे गुजरती है और गुजर जाएगी. एंड कुछ लोगों के लिए इससे, कुछ क्या, बहुत सारे लोगों के लिए इससे ज़्यादा मुश्किल गुजर रही है. ठीक है ना. हम बहुत फॉर्चुनेट लोग हैं. वी लिव इन अ बबल. वी लिव इन अ बबल एज इन के हम बाहर जाते हैं, हम जिंदगी एंजॉय करते हैं. हमारे पास डेली सारी ज़रूरतें हैं. ज़रूरतों के अलावा हमारे पास सारी लग्जरीज हैं. In a country where luxuries, I'd be a hypocrite to say this, but in a country where I don't think we deserve luxuries, where so many unfortunate, especially now, where there's so many unfortunate people, जिन्होंने इससे बहुत ज़्यादा सफ़र किया है. मतलब I don't want to bring the mood of the room down, but it's a fact. A person who has, I heard this, it was devastating news. 6 बच्चों का बाप और एक गाय. हाँ. वो गाय को बचाए या अपने बच्चे को बचाए. Heartbreaking. So अगर ये, और ये तो this is just the, ये तो कुछ भी नहीं, इससे बहुत बड़ी बड़ी ट्रेजेडीज हुई हैं. पूरी जो हैं फैमिलीज जो हैं निकल के आई हैं from. Anyway, so I'm saying that ठीक है, मेंटल दुख एक बड़ी, एक बहुत रियल चीज़ है. But we are very fortunate people, and we should learn to count our blessings. We should count our blessings. So this is nothing in comparison to that. But yeah, here's what I think, that ये एक necessity नहीं है हमारी, ये एक luxury है, ये एक want है, और ये अच्छी चीज़ है. entertain होना चाहिए. Why not? You know, ज़िंदगी बहुत ड्रैब हो जाए otherwise, right? We're not used to that kind of lifestyle. We're not used to the lifestyle कि जी हम 800 साल 900 साल पहले जाके हम उस तरह शायद रह नहीं सकते. हमारे अंदर वो अब हिम्मत नहीं है, और शायद हमारे अंदर वो, इसको कहते हैं ना, वो we're not as big humans as that as then anymore. Like हमें distractions चाहिए, तो वो होनी चाहिए. But ये, this is nothing to cry about. हाँ, it is to cry about when you can't afford to eat. You literally are scavenging and scrounging for food. That is a situation that you should be scared of, not this. So yeah, अगर है तो है, नहीं है तो ठीक है यार, अल्लाह हमें और कुछ दे दे, और कोई तरीका दे दे आगे चलने का. But I don't, and as मैं शायद again वही वाली बात है कि बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ. I can't speak for my entire fraternity, but I feel that अगर ना भी होता अभी भी तो ठीक है, दुख होता, but हम भूखे ना सोते. Has COVID taught you to look at it? The pandemic, the whole insecurity, and the, you know, how it just shut life down for a while. You know, the way we knew it. Did this teach you to think about things like this? कि कोई बात नहीं, गुजर जाएगा, हो जाएगा. At least we have things to eat. Do you think that that's what's? नहीं, I think एक बेसब्री हम सब में होती है. देखें, I feel that we all want to advance in life. We all want to do, and that therein lies a very big problem. That is the catch-22, na? Okay, you want to get rich or die trying, right? And हम सब के सब उस रेस में लग गए हैं, and I'm no different as well.
सबको सब कुछ चाहिए, सबको सब कुछ चाहिए, राइट? सो आई थिंक मे बी शायद, और सबको मुझे लगता है कहीं ना कहीं ब्रेक भी लगती है जहाँ पर बैठ के 2 मिनट के सोचते हैं कि नहीं यार, नहीं थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। सो मुझे लगता है कि मेरा वक्त अब आया है शायद इतना सोचने के लिए, और कभी कभार आता भी रहा है बीच में, पहले भी आता रहा है, बट नाउ आई वेरी स्ट्रांगली फील कि यार मिले, क्योंकि ये सिर्फ मेरी फिल्म नहीं है, ये और भी बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। आई विश इट ऑल द सक्सेस इन द वर्ल्ड. इट इज वेरी एक्साइटिंग इफ इट सक्सीड्स. Yes. But I got to spend this time with them, and especially the people who put their money into it. I would like for them to get it back and make 10 folds on top of it. Yes, and make more 100 movies. folds. Be more ambitious, make even more movies. बेशक करें. But बहुत डेंजरस बात कर रहा हूँ, अगर ये ना भी होता तब भी मैं कहता कि ठीक है यार, कोई मसला नहीं है, doesn't matter. क्या हो जाएगा? What's the worst is going to happen? Fawad Khan is not a good actor anymore. That's all right. For me, I'm talking about personally. But I hope that I have some other means to carry on then. Yeah. But Fawad, you've always been more careful than others. You've never been in a rush. You never had a signing spree. चाहे जो भी हो, चाहे मौला जट डिले भी हो, चाहे नीलोफर भी ज़ाहिर है इससे बहुत पहले आ जाती है अगर कोविड ना होता, फिर भी आप कभी साइनिंग स्प्री पे नहीं गए. आप कभी इतना परेशान नहीं हुए कि आपने अपनी सिक्स सेंस को कि ये स्क्रिप्ट अच्छी है बुरी, उसको आपने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया. Is that something just inborn in you? Because people do sign things in a panic. They just do it because they're like, हम नज़र तो आए हर साल. I've never associated that with you. I appreciate that about you. Oh, all right. Thank you. And I think, you don't know, I just said you are very well loved, and I'll come back to that later. All these many times that I've interviewed actors, young actors, older actors, almost everyone gives me a Fawad Khan example. Fawad Khan ko dekho, wo ye kar rahe. So you are very well respected. And I'm very scared. And you're not on social media, so you don't even know this. You don't even know this because you're not on social media. ये सब respect इसीलिए है क्योंकि बाकी सब हम it's a human urge I guess, वो they feel कि हमें visible होना है, हर साल दिखना है, वो कुछ भी sign कर लेते हैं फिर उस desperation में. You've managed to resist that. Is that just something that just the way God has made you? Is it? ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने पे, you should ask God that. Is that the way God has made you? Then He knows यानी best. कि क्या? How are you able to resist it? You're in an industry जहाँ बाकी सब एक रश में है, बाकी सबको insecurities हो रही हैं कि नहीं हम हर साल नजर आए, लोग हमें भूल ना जाएं. होती हैं, ऐसा नहीं है कि मैं I'm not insecure. शायद इतनी नहीं होती फवाद. नहीं, I just feel that you see these people जिनकी आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि again then you'll say कि यार ये आपकी humility और humbleness है और जो भी कुछ है, but I don't think it's that. It's not modesty. I just feel that I've been very lucky. I've been very lucky. I've been very fortunate. I can't thank God enough that I don't think I have probably I try hard. I work hard. That's true. And I don't like कि मैं अपने काम के साथ dishonesty करूँ, और मैं शायद कभी कभार कर भी जाता हूँ, ठीक है ना? But I don't want to do that. Like sometimes a shot will be done, I'll be like, no, I think I can do better than this. Let's do it again. But that's because I feel that it's 2 people who make or maybe it's 3 people who make a scene, or it's 4 people who make a scene. And I like to work for that reason, not for... Obviously fame किसको अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना? और मैंने भी काफ़ी एक क्रेजी किस्म का फेम भी देखा हुआ है. आई एम नॉट ट्राइंग टू कॉम्प्लीमेंट उसे, सबने शायद देखा हो, बट मैंने जो देखा है उसके बाद दिस इज़ द कॉम आफ्टर द स्टॉर्म, ठीक है? सो ऐसा हुआ भी था बीच में कि आई स्टार्टेड थिंकिंग कि यार ये क्या हुआ है मेरे साथ. But then I always question the idea of what is it that makes people idolize others, especially when it comes to celebrities. You know, what is it? What do people love about them? Why do they go crazy? Like I myself had Michael Jackson fever, right? Yeah. And वो जो, if you remember, जब उसकी history की DVD आई थी, there was this whole, इसमें पूरा statue erect होता है Michael Jackson, and people are crying and all that. And I was sitting, when I was watching it on DVD at home, I was also crying, like Michael. So, and for other actors as well. So, but it's hard to explain that phenomenon, and that makes me think that
it's something that's very scary because one day you're here, the next day you're here. It takes very little to fall from where you are. So being more prepared कि यार ये कल को नहीं होगा, I think is the best way forward. And for that, आप जल्दी में अगर रहेंगे, then you'll be constantly consumed with that thought कि I need to be seen tomorrow, I need to be seen tomorrow, I need to be seen. So you're not obsessing over it, na? I don't want to. I maybe do too, but I don't want to. I try to save myself from doing that. And secondly, I think much easier layman explanation is कि मैं बहुत सुस्त आदमी हूँ. और मेरे एक प्रोफेसर थे, मैंने और इंटरव्यूज़ में भी कहा है, उन्होंने कहा बेटा सुस्ती हज़ार नेमत है, जो काम आसानी से किया जाए उस पर मुश्किल डालने की क्या ज़रूरत है. सो आई फील कि अगर एक अच्छा काम कर लो और इसकी आप रिवॉर्ड्स और बेनिफिट्स रीप करें, जस्ट टेक इट लाइक दैट. अच्छा. लाइफ, देयर इज़ अ लाइफ आउटसाइड ऑफ अ सेट. And I'd like to live this that bubble. life. But when you're on set, are you that actor who comes alive in front of the camera? Are you like that too? Do you just Yeah, because switch? the real Fawad is a very uninteresting person. No, so I feel no, I'm interviewing you. You're not uninteresting. That's it. No. So I'm just telling you, I'm not like, you know, like I know a lot of people who start snoring when I'm talking, right? So, but thank you so much for your patience. But I'm just saying that no, the characters, I don't find you uninteresting. The characters that I play, that's the time where I can be like free and just be another person, and just like sort of let out a side that maybe I might be very shy about showing to people otherwise. So I can experiment more, and that's maybe why I become alive. Okay, coming back to Maula Jatt, rather than delving deep into your psychosis. चलें क्लीशेड क्वेश्चन मुझे पूछना पड़ेगा कि आपने पंजाबी सीखी क्या मौला जट के लिए? ओह या पंजाबी सीखी मैंने और आई वाज सो स्कैर्ड क्योंकि हमारे फिल्म के अंदर फारिस, अली अज़मत, हमज़ा, गौहर, इन सबको and everyone knew Punjabi. I guess it was me, Humama and Mahira who did not really know the language well. और मैं तो मौला जट का रोल प्ले कर रहा था और मेरे सामने मेरी टक्कर में इतना such a great actor हमजा, such a great actor. और क्या प्रेजेंस है उस आदमी की, क्या प्रेजेंस है. सो अब उसके सामने मैं कह रहा हूँ कि यार चलो उर्दू में अगर होता तो शायद मैं थोड़ा संभाल भी लेता, बट इसको तो ऐसी पंजाबी आती है, इसकी तो like he's got it on his fingertips. He's got it sort of figured out. And ऊपर से मैंने एक I mentioned in another interview that उसकी आवाज़ भी इतनी भारी है, इतनी प्रेजेंस है. It's got good presence. बट मौला की भी आवाज़ बड़ी भारी है, वो आपने बनाई? पता नहीं मुझे, बनाई कहाँ से निकली मुझे नहीं पता. वो आवाज़ कहाँ से निकली. बस जब आप इस तरह पूरे ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे तो वो खुद ब खुद मूड में आवाज़ भी आ जाती है. Maybe. But I was very afraid. And but I think I owe it to Bilal and to Nasir Saab and to my co-actors as well कि यार मैं ये सही बोल रहा हूँ. Like even during dubbing, कभी हम इकट्ठे बैठते थे कि यार ये accent सही है कि नहीं है, ठीक है ना. So I was very worried about that कि पंजाबी मेरी सही आएगी कि नहीं आएगी, but I think with their help I got through it. Okay. Yeah, I managed. And now you speak some more Punjabi than usual? No. It's like it was there then and now it's gone. इसलिए मैं आपको कोई डायलॉग बोलने को कह भी नहीं रही. जो सब आपसे कोशिश करेंगे आप कहें मौला का एक डायलॉग, बट नहीं करूँ ना. चले नहीं करती. But okay, it's fine. So and then of course there are no songs. I don't think there are any songs in Maula Jatt. There's this one song, Saima Baloch is dancing in one song that I know of, but it isn't really a musical kind of movie, of course, it's right? A lot of actors are bad at business. Are you somebody who's better at it so that you plan things accordingly ताकि आप काम भी अपनी मर्जी का करें और घर भी आराम से फंक्शन करता रहे? Are you the? मैंने कोशिश हमेशा ये की है. कोशिश हमेशा ये की है. And I'm अल्लाह का शुक्र है. Alhamdulillah, I'm very fortunate that I'm comfortable. I live comfortably. ठीक है. और वो आप बहुत बार अपने सीनियर एक्टर्स को देखते हैं, आप हॉरर स्टोरीज सुनते हैं कि अब वो इस हाल में रह रहे हैं. पहले वो तो आई थिंक बहुत से एक्टर्स डर जाते हैं वो देखकर आजकल के, इंक्लूडिंग पीपल योर पेयर्स कि हमारा ऐसा ना हो, बिकॉज ऑफ कोर्स एक्टिंग इज़ इट्स लाइक मजदूरी, राइट? आपका जब तक काम चल रहा होता है आपका पे चेक आता है, जब काम रुक जाता है तो उन महीनों आपका कोई पे चेक नहीं होता, तो there's no regular salary. No, but there are a lot of other actors, they made investments well ahead. It's very unfortunate for those.
ये क्या बात है, तो अब इन्वेस्टमेंट्स पे आ गए हमने, बट आई थिंक नहीं आप गाइड करें ना सबको कि किस तरह ख्याल करते हैं। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक द बेस्ट एडवाइस इज नो एडवाइस। जो आपको इंसान जो ना बैठ के मशवरा देना शुरू कर दे और कहे कि यार पत्थर में लकीर कर देगी, यार दिस इज द वे टू गो अहेड, आई थिंक सुनो सबकी, करो अपनी वाली बात जो है किसी हद तक ठीक होती है, किसी हद तक ठीक होती है। लर्निंग फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंसेस बाय ऑब्जर्वेशन इज द बेस्ट वे, सो यू नीड टू ऑब्जर्व। मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ढकी छुपी चीज़ को कर रहा हूँ, मैं मेरे सबके सामने है कि मैं क्या करता हूँ, एज इन लाइक यू नो लाइक व्हाट माय वे ऑफ वर्किंग इज, what how many jobs I pick up, or whatever I do is on the screen. You can tell. So I think our actors in today's age वो इतने समझदार हो गए हैं कि they do make their investments on the sides कि ताकि there is constantly something happening. But secondly I think जो सबसे बड़ी चीज़ जिससे हमने सफ़र किया है हमारी इंडस्ट्री में, जिसके बाद शायद तो मैं कभी भी टीवी पे मुझे कोई काम ना दे, इसके बाद अगर मैं करूँ भी तो इसके रॉयल्टी का सिस्टम नहीं है इस मुल्क में। और उसने आर्टिस्ट को मार दिया है। हम एक बार में एक चेक काट के देते हैं और उस आर्टिस्ट का हम ड्रामा 100 साल चलाते हैं। बहुत अनफेयर है, ये अनफेयर है, बहुत अनफेयर। पता नहीं कब आई थिंक रॉयल्टीज का सिस्टम आ जाना चाहिए। इट्स हाई टाइम नाउ। पहले शायद हम कहते थे कि नई चैनल्स इतना कमा पाते थे, बट आई थिंक नाउ इट्स हाई टाइम, यू नो, एंड इट विल हेल्प आवर वेटरन फिल्म इंडस्ट्री एज वेल। Oh, like anything, and it's their right. Yeah, it's the right. I mean, दुनिया भर में actors को मिलता है. Yeah. It's your right. So this is one part of the industry that can evolve. अच्छा, I'm not going to ask too much about Neelofar, even though I've got Neelofar written right here. But I want to ask you about it sooner, closer to the release, inshallah. But tell me, is Fawad Khan the producer even more particular about the details as opposed to Fawad Khan the actor? I mean, as an actor, आप मुझे कह रहे थे ना कि मैं फिर से शूट कर लेता हूँ, बट जब आप बिहाइंड द कैमरा भी हैं, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा भी हैं, तो आपको तो और परेशानी होती होगी। I don't think it's a role that should be. मैंने शुरू में अपनी टीम से कहा था, मैंने कहा कि ये दो काम मुझसे ना करवाओ। हाँ। ये दोनों काम मैं कर नहीं सकता। कर लिया क्योंकि फिर और नहीं, well anyways, वो एक लंबी कहानी है। I just hope कि again it's one of those experiences that I hope that ends up in a good space. But मुझे लगता है कि मैं difficult producer नहीं हूँ. I think I like to keep. I hope the actors that came on my set felt that as well. कि हमने उनकी खातिर तवाज़ो सही की। अच्छा, खाने पीने पे, रिहाइश वहाइश सब चीज़ों में। नहीं, I felt that जो चीज़ हम अपने लिए चाहते हैं हम दूसरों के लिए भी provide करें। ये ऐसे ये सब यूं हो, और मतलब होता है ना, some people are perfectionists। बिल्कुल, I think वो एक certain वो phases में आया, like you know, like होता है कि अच्छा अब अगर नहीं और तो मुझे ज़रा थोड़ा सा कर लेना, तो इस तरह की चीज़। But yeah, I think I'm a very difficult producer to work with in that way, in that sense कि I wouldn't work with myself. You wouldn't work with yourself, but you just have. I wouldn't work with myself. Yeah. चलें तो thumbs up to Mahira Khan. She's done it. Oh yeah. She sings about it every time I talk to her. But I look forward. She's done an amazing job. She's done a fantastic job. I'll talk about it at some point. But because we're talking about Maula Jatt these days, I want that to लेकिन मैंने तो मनी बैक गारंटी का भी थोड़ा सा पूछना था। वो next year आ रही है। वो भी next year आ रही है। Was it something after Maula Jatt and Neelofar? ये सब simultaneously ही आगे पीछे थे, I suppose. So did it give you a break? Let you enjoy another facet to your personality? So the thing with comedies is, जो कि मुझे लगता है, it's the most fun way to work. I feel कि आप comedy करके आते हैं, आपका you're relaxed. दिमाग ठंडा होता है। दिमाग ठंडा होता है। अब आप ट्रेजेडी कर रहे हैं कि यार अब आपने रोना है, आपने कब्र पे बैठ के रोना है, आपने यू नो रोमांस के अंदर ट्रेजेडी भी करनी है, ये भी करना है। वो कॉमेडी इज समथिंग दैट आई फील इज सो मच मोर, it keeps you in such a good mood. I would love to keep on doing comedies actually, and really? Maybe if I were to, like, if in the future I do more work, or whenever I do, or beyond the work that I've already committed, I think I'd like to do only comedy. Acha. Yeah. So there's a grand action movie, a heavy duty romance and a comedy. What do you like to watch personally? I'd watch all three of them personally. I'm saying being as लेकिन working. आप as an audience क्या देखते हैं? घर पे क्या देखते हैं? I mean, मैं as an audience क्या देखता हूँ? Cartoons देखता हूँ मैं. You'd be surprised. I watch cartoons. Okay. I love cartoons, and I'm not just saying cartoons like Tom and Jerry. Well, obviously those are classics, and there's so many more. But मुझे animated films जो है बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं.
I really enjoy them. And And there's some that are very, they're not all of them are very light-hearted ones. They're very sophisticated ones also. There are sophisticated animated films as well. I just love them. I love animated films. But you'd watch all three of these movies because they are such three different flavors. Maula Jatt, Neelofar and Money Back Guarantee. I'd hope people would watch all three of them, yeah. Oh, I think they will. फवाद इतने सालों बाद आ रहे हैं, हम तो बहुत शौक से देखेंगे. अब तो जाने नहीं देंगे. अब आते रहें. अब आते रहें. You said you wouldn't work with yourself as a producer. How's Ammara, Hikmat and Bilal Lashari Amazing, as producers and amazing, directors? amazing. तंग नहीं करते, ये नहीं कहते फिर से करो, ये क्या कर दिया, ऐसे क्यों बोला? नहीं, मैं एज एन एक्टर मैं फिर से करने में मुझे कोई एतराज़ नहीं. हाँ, अगर ये हो कि फिर से करो और चीज़ सही होगी तो मैं कहता हूँ यार, वो हमारे यहाँ एक वो मिसाल है, सेफ्टी, एक सेफ्टी ले लेते हैं. मैंने खुद भी जो है सेट पे कहा कि चलो यार एक सेफ्टी ले लो. वो एक आदत, बुरी आदत पड़ गई है हमें. एक चीज़ होती है वो, एंड बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कहीं फोकस पुल जो है कहीं से थोड़ा ख़राब हो गया और ऑल दैट. बट एक से ज़्यादा सेफ्टी जब आप करने पे आ जाए, बिकॉज नॉर्मली होता ये है कि यू स्टार्टेड विद वन टेक, यू लाइक्ड इट, फिर इससे बेहतर हो सकता है. यू डू 2, 3, 4, 5, 5th टेक इज़ ग्रेट, ठीक है ना, और 4th टेक इज़ ग्रेट. इसके बाद आप कहते हैं एक सेफ्टी कर लो. फिर आप सेफ्टी करते हो, वो सेफ्टी ठीक नहीं होती, फिर कहते हैं एक और सेफ्टी कर लो, फिर एक और सेफ्टी कर लो. सो यू एंड अप डूइंग अराउंड 10 टेक्स इन दैट सेफ्टी का चक्कर. तो ये जो सेफ्टी हम हर वक्त फेर रहे होते हैं ना, कॉन्स्टेंटली दाढ़ी अपनी मूंढ रहे होते हैं, शेव कर रहे होते हैं सेट पे, ये जो सेफ्टी वाली चीज़ है विच इज़ कम मोस्टली फ्रॉम द एड इंडस्ट्री. आई थिंक दैट इज समथिंग दैट मे अर्क मी, बट अदरवाइज आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम. एक्शन सीक्वेंसेस में कितना मुश्किल होता होगा ये गंडासा बार-बार एक्शन सीक्वेंसेस में आई थिंक नो ऑब्वियसली they're not that cruel, and I'm not saying that Ammara Bilal do this, I'm just saying that you said अगर रीटेक करना हो तो when does it become annoying? So it only becomes annoying then. So in action sequences obviously they're very understanding. They would not say कि यार फिर से इसको जो है चोट लगा. Did anything funny happen on set? It was such a intense passion project. I wonder if silly things happened on set. A lot of silly things happen on set. Some of them cannot be mentioned. Are there some that are mentionable that फिर हम जब वो सीन देखेंगे हम कहेंगे ओह तब ये हुआ था. मैं फिर वही कह रहा हूँ ना कि वो तो बिल्कुल ही मेंशनेबल नहीं है. वो जब सीन देखेंगे उसके बाद बताऊंगा हुआ क्या था. And of course you've got Barzakh coming up with Sanam Saeed on Z5, but you can't talk about that. I would rather you talk to Asim first so that he can tell me how much I can reveal about it. And then I'll talk to you about it. I know a little bit about it. वो थोड़ा तो आ जाता है. आप सोशल मीडिया पे नहीं है, मैं तो हूँ, तो वो मुझे थोड़ा सा पता है. But I think it's so wonderful. We'll be seeing Fawad and Mahira. We'll be seeing Fawad and Sanam Saeed. I mean, all your hit dramas, all the memories are going to come back to us, and it's exciting. So I'm glad you're excited. Yes, I am, and I hope you are too. Your movie is coming, and good times ahead, inshallah. Thank you so much for this interview. Okay. Thank you.